years. This is a Times Now special investigation. It's been over 3 months since two bright young IT professionals were mowed down in Pune by speeding Porsche. The car was allegedly driven by an underage juvenile, and he'd been out partying and had racked up a big bill with his friends at the two pubs. Now, at that time, there was a crackdown on pubs across the state that were found to be serving alcohol to the underage person. But was that action permanent is the question we are asking, and we've sought to answer that particular question. Our team visited a number of pubs and restaurants in upmarket areas of Mumbai to check whether age is a criteria for whether they serve alcohol to their customers or not. Remember, the legal age for consuming hard liquor in Maharashtra is 25 years, while for beer, it is 21 years. Have a look. So actually, it's my younger sister's birthday party. So her friends would be coming. So everybody consumes alcohol properly. So you guys will be serving everything, right? Yes. There won't be age wala thing, right? age wala age करेंगे. 21 plus वाला. हाँ. 21 plus चलेगा. 21 से लेकर 24 तो कुछ हार्ड लिकर नहीं है उनके लिए. 21 से ऊपर वाले भी हार्ड लिकर है. तो देख लेंगे. सैटरडे है ना. हाँ. सैटरडे संडे देख लेंगे. टोटल प्राइस कितना है आपके? 10 to 15. 10. तो कर दोगे ना? हो जाएगा. वोडका, विस्की, रम सब हो जाएगा. ओल्ड मग है और बकाडी चलेगा. हाँ. Because most of them are college-going students, right? Okay. So all of them are 21, 22, 23. So चलिए सेक्शन पूरा दे देंगे. मोदी सैटरडे संडे को हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे. अभी बिजनेस देगा सर. वो सब अलग अलग चलते हैं. हम लोग इस साइड सेक्शन दे देंगे. 21 के नीचे वालों को 21 के नीचे वालों हार्ड लिकर नहीं सकते. और बोलेगा तो नहीं कर सकते. प्रॉब्लम क्या दे सकते हैं? उन लोग भी तो मॉकटेल्स वगैरह ही मॉकटेल्स कर सकते. बियर भी नहीं. बियर में भी प्रॉब्लम हो जाएगा. कोई देख लिया ऐसा होगा. घूमते रहते ना सब. देखने तो एकदम देखने के हाइटेड वगैरह है ना. हाँ हाँ. हाइटेड है ना. देख अच्छा वगैरह दिखेंगे नहीं. सबसे साइज के भी वो साइड से देख लेंगे. तो 21 के नीचे वालों को भी देखेंगे. वो कर देंगे. So as you saw in the first pub that Times Now visited, the management seemed to think that 21 or 22 was a permissible age to be served most kind of liquor. Now, although the situation could be elevated if the customer was tall or didn't look like a kid. Let's take a look at another pub that Times Now team visited. Actually, we wanted to do a party. 50 of my friends would be coming. So they are below 25. But obviously everybody drinks hard liquor and everything. So will you allow that? 21 plus है. हाँ. 21 plus है ना. Allow करेंगे. 21 plus होना चाहिए. मुझे डीजी लॉकर या हार्ड कॉपी जो भी रहेगा ना, गवर्नमेंट को आईडी लगेगा. मैं अलाउड कर दूँगा. हार्ड लिकर चलेगा. अभी वो एक डायरेक्ट में आपको कमिट नहीं कर सकता, बट देख लेंगे जिसका हो जाएगा. ठीक है. सभी के लिए देख रहे हो. परसों के लिए. आईडी चलेगा. ठीक है. In this thing that you just witnessed, it's clear that for those who can prove that they're 21-year-old, being served liquor would not be an issue. Again, the only question is what kind of liquor. But notably, nobody quoted a 25-year requirement that we told you about. Now, after two pubs in Khar, we visited another one in Dadar, where the topic of discussion was a liquor permit. Have a look. सर, ये बाहर बोर्ड लगा था 1 day परमिट का. वो क्या एग्जैक्टली चीज है? वन डे परमिट है. वो लोग एक रूल्स आते हैं. जिसके पास परमिट नहीं है तो 1 day परमिट में हमारा इधर से वोटे से इश्यू करते हैं. कभी कभी 1 दिन के. वो कभी कभी हम लोग देते नहीं. तो कभी कभी वो लोग पूछते हम लोग 5 रुपये लगते हैं. तो 5 रुपए में 1 day परमिट मिल जाता है. हम लोग कुछ पैसे देते हैं. इसके जरूरत है हम लोग 1 day परमिट ऐसे दे देते हैं. इसलिए कभी कभी रूल्स आते हैं वो लोग एक्साइज की तरफ से. सर, मैंने वो सोचा कि 1 day परमिट क्या है, मतलब वो क्या है एक्चुअली परमिट आना चाहिए. होटल रेस्टोरेंट रूल्स के हिसाब से परमिट चाहिए पीने वाला. अच्छा.
परमिट जिसके पास है वो लोग दारू देना जरूरी है। हाँ, लेकिन जिसका परमिट नहीं है उन्हें के लिए 1 डे परमिट बोलते हैं कि इश्यू कर रहे हैं। तो वो मैंडेटरी किया है, कंपल्सरी किया है। बस नहीं किया, वो पहले एक बार वो लोग आए थे प्रॉब्लम आएगा ना जब वो लोग एक ग्रुप निकलता। हाँ, जब ऐसे तो नहीं जरूर नहीं है। और ये 25 वाला एज वाला? हाँ, वो तो थोड़ा बीच ठीक है। 21 से 24 तक माइल्ड बियर पी सकते हैं, स्ट्रॉन्ग है हमारा हार्ड विस्की ऐसे नहीं पी सकते। अभी मैं सोच रही थी, मतलब मेरे कुछ फ्रेंड है वो थोड़ा 25 के नीचे, मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, तो हम सोच रहे थे नहीं तो मैं पार्टी के लिए सोच रही थी यहाँ पे। माइल्ड बियर सब अभी हार्ड लिकर कंज्यूम करते हैं, तो कुछ पार्टी के लिए अरेंजमेंट हो सकता है क्या? पार्टी हम लोग इधर बुकिंग नहीं, मतलब दो टेबल मिल जाएंगे। 4 जन 8 जन मिल जाते हैं। 7 नंबर हार्ड लिकर दे दो ना। कितना 21 से ऊपर है ना सर? हाँ, 21 से ऊपर दे सकते हैं, हो जाएगा ना, ठीक है, परसों के लिए। And so in this pub, the bone of contention initially was the permit. But after explaining what those are, when asked about the legal drinking age, the pub manager states that it is 25. Briefly, he says that anyone between 21 and 25 can have only the beer. But when asked again and being persistent, he effectively said that the hard liquor was back on the table. Now, since conducting this sting that we showed you, we've also spoken to the Maharashtra Excise Minister. He spelled out the rules and said that there would be no tolerance for the violation by the pubs, and also said that the flying squads had been tasked with ensuring this. देखिए, अभी जो है उसके बारे में उसके बाद हमने एकदम स्ट्रिक्ट डायरेक्शन सभी पब्स, सभी बार्स, सभी रेस्टोरेंट्स को जारी किया है और रिपीटेडली हमारा जो फ्लाइंग स्क्वाड रहता है या वो एरिया का जो भी हमारा इंचार्ज ऑफिसर रहता है उसको चेकिंग करने के आदेश दिए और बड़े तौर पे चेकिंग चालू है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैंने प्रेजेंटेशन लिया है जिसके तहत अगर जो भी कोई माइनर इमीडिएटली वहां से जाता है तो उसका स्कैनिंग होगा वो सिस्टम में और उसका अलर्ट हमारे एरिया के ऑफिसर के पास भी जाएगा, वहां के एसपी के पास भी जाएगा, साइमल्टेनियसली वहां के डिप्टी कमिश्नर के पास भी जाएगा। सर, हमने कई मुंबई के बास में विजिट किया, किसी ने हमें एज प्रूफ नहीं पूछा। हमने वहां पे जाके मैनेजर से भी चर्चा की कि हमारे यहाँ पे पार्टी है, क्या आप अलाउ करेंगे? तो उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि हाँ, हम अलाउ कर देंगे इवन इफ दे आर बिलो 25। उन्होंने बस पूछा अगर वो 21 के अबाउ है तो चल जाएगा। क्या सिस्टम का भय उनके मन में अभी तक नहीं? देखिए ना, 21 के बिलो वाला माइनर 18 वाले के लिए भी हाँ नहीं, ऐसा नहीं हो। अगर ऐसा कोई करता है तो वहां तो हमारा फ्लाइंग स्क्वाड, अभी मैंने जो कहा ना, वो पूना केस हो गया या दूसरा हिट एंड रन का केस मुंबई में हो गया, इसके बाद में बहुत बड़े तौर पर हमारा फ्लाइंग स्क्वाड का कार्रवाई चल रहा है। सर, 1 डे परमिट के रिलेटेड क्या बताना चाहेंगे? किसी को भी बार, रेस्टोरेंट, पब, डिस्कोटेक कहाँ भी जाके ड्रिंक करना है तो उसको अगर परमिट लेना ही पड़ेगा और परमिट लेने के पहले उसको उसका एज प्रूफ देना ही पड़ेगा। पर कई जगहों पे हमने देखा कि माइनर्स को भी लिकर सर्व की जा रही थी और ये भी देखा कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर थोड़े ज्यादा लोग हैं तो उनको सर्व करने के लिए। क्या एग्जैक्टली ये सिचुएशन है? अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इसीलिए लगा रहे हैं कि इसके बारे में फिजिकली वहां जाने से पहले ही अगर कोई माइनर जाता है तो वो सिस्टम में उसको स्कैन आएगा और उसका स्कैन होने के बाद उसका अलर्ट भी आएगा कि ये माइनर है। My colleague Shrishti joins us live in the broadcast. She's the one who brought this truth to the fore. Shrishti, despite the assurance by the excise minister, we see that many pubs are still flouting the norms. Give us more details. Well, of course, when we talk about pubs in Mumbai, importantly, what we have noticed is that wherever we have visited, nobody has asked us for identification card, and even other people who were coming there, they were also not asked about their age identification card. And
one more thing which is really shocking, that Maharashtra government has made it mandatory to have a one-day permit for people who wants to consume alcohol. However, that has also we have seen was not being given by the bars. Now that permit can be taken from the excise department. There is a portal for that. Also, it can be taken from bars. However, when we spoke to few people related to that particular bar, when we asked them that there will be a party and we want to conduct a party over here, few people who are below age of 25, probably the age of 21, they will be coming. Will you be serving alcohol? They were absolutely fine about it. One of the person, even asked us that if the other person is tall enough or not, then we can serve, and then they won't land into any problem. But the bigger problem in this entire case is that we have seen earlier in Pune Porsche case how horrific it turned out. 2 people have lost their life just because a minor was consuming and having a nice time consuming alcohol, and the way he was riding that particular Porsche car took the life of 2 people. And that's why this is really important to tell the viewers, to tell the entire government as well, that they should be strict enough so that such incidences should not unfold in the future. However, when we spoke to the excise minister Shambhuraj Desai, he mentioned the fact that we have flying squads at the place. We have certain area officials who are dealing with this entire case. However, now the excise department is planning to put in one more check that will be at the doors of these particular bars, wherein if a minor enters, then his identification will be revealed, and that alert will be given to the deputy commissioner, to the area officers and other officials who are present over there. However, it takes a lot of time to implement such technologies in the government, and it will take a lot of time to put in place that particular technology in this entire state. What one can do, or what the people who are serving alcohol can do, is that they can just basically check the age proof, and that's the basic thing that they should do. However, when we carried our investigation, nowhere we have witnessed that nobody asked us for age identification, neither they were asking for one-day permit. And it's really serious that minors, the children, the young children who are almost 21, 22, they are being served hard liquor in a way that there is no problem in that, and that's the main issue. And not only they were talking about people being about the age of 18 to 21 probably, they were also mentioning, when we asked them, that will you be serving alcohol to the people who are about 21, and it is mandatory in the state of Maharashtra that the people who are between 21 to 25, they should not be served hard liquor. But they were absolutely okay with the fact that they will be served hard liquor. They should have a identification card. And importantly, when we spoke to other people around the bars and clubs, we figured that they are not fitting in that particular age limit. However, right, Krishi, and even after this horrible incident, we see that many pubs are still serving hard liquor to the I am the future that was born 100 years ago. I am the purpose that emerged with India's independence, to be a force for business that takes India to the world and the world to India, creating pathways of self-reliance, to stand for progress, the planet and the people, towards a future made perfect, and be a force creating abundance. Because independence is not a moment in history, it's a never-ending path to prosperity. Aditya Birla Group, a force for good.